वेलकम बैक टू लाइफ से कर लो दोस्ती। और हम यही चाहते हैं और यही मैसेज भी देना चाहते हैं कि आपकी किसी ना किसी तरीके से लाइफ से दोस्ती हो जाए, बिकॉज हम हर किसी से दोस्ती तो करते हैं मगर शायद अपनी लाइफ से ही नहीं दोस्ती कर पाते, अपनी जात से नहीं करते। एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब सबको शेयर करना पड़ेगा कि पहला चेक कितने अमाउंट का था और किस तरह खर्च किया। ये क्या बात है, ये आप बताएं। No, we can start with the 5,000. And how did you spend? 15 कहाँ years से back. आया था? क्या मतलब? किस सर्विसेज में? I started doing voice overs. So monthly मैं एक पैनल के ऊपर थी, एक मंथली में काम किया करती थी और महीने के बाद मुझे 5,000 लगता है आपका सबसे अमीराना चेक होगा। मेरा 750 रुपीज था फॉर एन आर्टिकल इन डॉन। अच्छा, वो तो एक दिन का काम था ना, महीने का काम। जो भी चेक तो नहीं, महीने चेक तो पहला ही था ना। When I did my graduation in commerce, then after that I started doing internship. It was some multinational sort of thing, and publicity firm थी ट्रांसवर्ल्ड के नाम से। और पैसे कितने थे? और पैसे बहुत हो रहे थे, तकरीबन I think 2,800 और या फिर 2,650 रुपए थे। जब हम लोगों को देखते हैं क्या लगता है कि कौन सा ऐसा काम है जो हमारे जनरल पब्लिक, हमारे जो लोग हैं मुल्क के, वो हमेशा बहुत ज्यादा करते हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है। They waste time. That's it. They waste time. How Like do they doing waste what? time? How? Doing nothing. Doing nothing. आप देख, और मुझे I don't understand this thing. They are always in hurry. आप सिग्नल पे खड़े हो, इशारा तोड़ के भाग रहे होंगे। और पहुंचना कहाँ है, करना क्या है, किधर पहुंचना है? They are not punctual. आप किसी भी आपने किसी को टाइम दिया, चले जाएं। And you know, I always feel myself as a loser because I am on time and people are coming after half an hour, after 1 hour, and it's like. And then you feel you're less important. Yes, and then you because start it seems that people are important make an entrance. आप शादी पे चले जाओ यार, बैठे रहो। लोगों का लोग ये कहते हैं कि आप जितनी देर से पहुंचेंगे उतनी ज्यादा आप अच्छा 3 बार वेट करता रहा था वैसे। अच्छा, when do you think you waste your time? कभी होता है ना कि आप इतना हर चीज को, टाइम को मैनेज कर रहे हैं, लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, कभी कभी दिल चाहता है कि बस ठीक है यार, I just want. That's actually not wasting time. That's just recreational. For me, like you know, मेरा जिम जाना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। Every day, like I do work out 5 days a week. What's your routine for a day? My day starts relatively early, like around 6:30. Good. And sometimes I go to the gym really early in the morning. Okay. ताकि मेरा वो एक things to do से खत्म हो जाए. Okay. Or I sit in the office and I start doing my daily things to do or monthly things to do. Or I write as well. तो रात को बैठ के फिर मैं music सुनता हूँ या मैं कुछ लिखता हूँ. What do you write? I write poetry. I write random philosophical verses and you were making fun of her philosophy. No, I was saying deep. आपने assume किया था कि I was making fun. I was jumping to conclusions. Yes, judgmental. So cognitive therapist यही कर. Judgmental. अच्छा, एक question which is very important. Don't you think ये जो हमारी इतनी fast paced life है, इसमें जो सबसे ज्यादा सफर करता है when we are managing time, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने रिलेशनशिप, स्पेशली अपने पेरेंट्स के ऊपर। Do you think so? Do you do that? Do you feel so? Yeah, I feel. You so. realize I feel that? very guilty. I feel lot of depression because of this thing. And let me tell you, this is very important thing. जब आप अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते हैं और जब टाइम गुजर जाता है तब आपको एहसास होता है कि आप तब ये कह रहे थे कि नहीं, अभी तो अम्मी टाइम नहीं, अभी तो मेरे बच्चे ने स्कूल से आना है, मैंने खाना लगाना है, मीटिंग कॉल करनी है, रिकॉर्डिंग का टाइम आ गया। And when they are not there, then you start feeling, oh my God, I have lost. But you are lucky that you realized. Yes, I realized it, and I make sure this thing कि मैं संडे का नाश्ता अपनी मदर के साथ करूं. I make a point कि मैं I'm coming, I'm on my way. चाहे सुबह 9 बजे से लेके मैं 9:15 का टाइम लगा दूं, but I make sure this thing. That उनको आप contact रखती हैं. And what about you? What about me? The same question. Do you give time to your parents? How can you forget this question? It's such an important question. नहीं, I give time to my mother. She's still here, and जितना time मिलता है, I spend. She enjoys a lot of your company. She enjoys. Do you tease her? I'm sure you do. do. Yeah, it's in you. अच्छा, there is another point. I bring the life घर पे जाके. अच्छा. अम्मी के साथ मेरा एक बिल्कुल ही different sort of relationship. बाकी बहन भाइयों के साथ मेरा बड़ा serious किस्म का relationship है. You are the eldest? No, I'm the youngest, but I still have a very serious sort of relationship with her. अच्छा, आप होंगे ना लाडले अपने अम्मी के, तो वो बड़े बहन भाइयों को पसंद नहीं होगी ये चीज, तो वो सारे इग्नोर करते होंगे, तो ये फिर होगा। अच्छा, Female.
एट टाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकालें, जाएं. देखिए आपकी ईद है, कोई भी फेस्टिव कोई भी है, यू हैव टू सेलिब्रेट इट विद योर इन लॉज. सो बंदों के लिए इट्स मच इजियर थिंग फॉर देम टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स. बंदों में भी तो जाना होता है. नहीं, आई एम टॉकिंग इन जनरल पब्लिक. इट्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट योर इन लॉज, इफ यू हैव गॉट बिग फैमिली, यू हैव टू बी देयर ऑन एवरी ओकेजन, ऑन एवरी मोमेंट. लाइक you have to be there. अगर unless you're somebody like me जो कि कहता है कि मैं नहीं आता. अच्छा, साल में एक दफा मिल लेंगे. और साल वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है. मेरा भी यही खानदान वालों से है, भी थोड़ा ऐसा सा ही ज्यादा होता है. I don't get it. I feel and there वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आम औरत की डिफरेंट होती हैं. सब कुछ है. You have to give priority to your in-laws. ऑलराइट, आपके जो दिन है, पूरा दिन है, उसके अंदर जो भी टाइम आप मैनेज करते हो, किस टाइम को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो आप? I love every part of my day, to be very honest. Like I enjoy the working time, I enjoy the running time, I enjoy the gym time, I enjoy my family time, I enjoy my cooking time. अगर मैं हफ्ते में एक आध दिन 2 दिन कुकिंग खुद करता हूँ तो वो कुकिंग का भी I really enjoy. How come you're so happy go lucky? हर चीज परफेक्ट है जिंदगी में, बड़ी परफेक्ट है. काफी हद तक. God's been very kind, alhamdulillah. God's been अच्छा, I think now it's And I about go back that I want to read my emails. now it's about time for you to read. Listen to her. We have 2 emails and a very quick read. Dear LSKT, I'm a busy mom with 2 kids and a working woman also. I try and give time to everyone and everything, but still feel I'm not doing enough and that gives me stress. I think एक काफी common complaint होती है ख़वातीन की और मर्दों की that they're not doing enough or everything. You can never do enough with life, to be very honest. Life is just You one have of to those be very things that progressive. You have to be. you've got to try your prioritize. best. You can prioritize कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ आज के लिए, इस महीने के लिए, इस साल के लिए, and make a long term plan कि जी 10 साल 5 साल this is the goal, and then work backwards in a straight line. A lot of people, what goes wrong is instead of working in a straight line, which is called the displacement, the shortest distance to a point A to point B, people start going idhar udhar, and that wastes time. Yes. There is another thing, like if you want to do something and you have some kind of determination and you want to achieve certain goal and you are an ambitious person, then you make sure every day you have to tell this thing. Like every morning when I get up, I said, Sam, you have to do this thing. Okay. I need this thing. I want this thing. So this kind of behavior will definitely अपने गोल सेट करें, अपने गोल सेट करें और फिर आप उसमें अपने आप को फोर्स विजुलाइज करें, और फोर्स अपने करें. आप को ओवर प्रेशराइज भी ना करें कि जी मैंने पता नहीं क्या आज मैंने बिल गेट्स बन जाना है. You know, let's not be too ओवर एम्बिशियस विद दैट. ओवर एम्बिशन बहुत जरूरी है. एम्बिशन के बगैर जिंदगी में कोई फायदा नहीं है. बिल्कुल कोई जिंदगी फायदा का. नहीं है और अब बिल्कुल हमें कोई फायदा जाना है. नहीं होगा अगर हम हमें ब्रेक यहाँ नहीं पर लेंगे, जाना है, नहीं ब्रेक लेंगे लेंगे. तो ब्रेक के बाद फिर दोबारा आना एक है. गुलदस्ता आप ले मेरा लें. ख्याल है आप ले लें ब्रेक, नहीं, आपको नहीं. बहुत जल्दी है ब्रेक लेने मुझे की. घर जाने की. घर जाने की जल्दी है. इन्होंने जी के कुछ इनकी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करना है. Here we're going to take a short break. We'll be right back after this break.